Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I'm going to discuss continuity and differentiability NCERT problems with you. So in earlier classes we have done till 21, I guess, and now let us start from the question number 22nd. So let's do it. For those who didn't remember, in continuity and differentiability, we just check where the function is becoming discontinuous. Sorry, where the function is becoming discontinuous in the sense like if a function is going, if the curve of a function is breaking somewhere at some point and going from somewhere else. So we can say that the function is discontinuous at that point. So that only we discuss in this continuity chapter. And for the function to be continuous, we basically check two things. One, that the limit of the function should exist at that point, and secondly, function should be continuous. Uh, function should the value of the function at that point should be equal to the value of limit at that point. So these two things we check in functions. So let's start. In question number 22, we have to check whether the function cosine, cosecant, secant, and cotangent functions are continuous or not. So sine and cosine, so we have proved in question number 21 only. So actually, see, we can do it like this way. Cosine is nothing but 1 upon sine x. And we know that 1 upon sine x is something like fx upon gx. 1 is always continuous and sine x is continuous. I already proved it. So we just have to check whether the sin x is not equal to 0, because we had proved this by theorem. We have studied this by theorem that a function in the form of fx upon gx is said to be continuous if and only if fx is continuous and gx is continuous and gx is not equal to 0 for any value of x. So only at those points where sin x is becoming 0, cosecant x is not continuous, else it is continuous. So the proof of sin x to be continuous is to be taken by the 21st part, and rest we will show that the points where the sin x is becoming 0, at those points cosine x is discontinuous, else it is continuous. Okay, it is question number 22. Okay, so cosec x can be written as 1 upon sin x. Okay, and we know that this is the form of fx divided by gx. It's a function of this form. So we know that this is continuous only when fx is continuous, which is because 1 is a continuous function everywhere. The function is 1, so it's obviously continuous. And g of x is also continuous. This is continuous only when fx is continuous and gx is also continuous. And g of x should is not equal to 0 for any value of x. ठीक है, तो जिस पे अपने को प्रूव करना है, तो बस sin 1 is continuous and sin x is continuous as proved in question number 21. So we have to just find out those points where sin x is equal to 0. तो sin x 0 कब होता है? ये चीज अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि sin x equal to 0 implies x is equal to n pi. n pi पे sin x 0 होता है क्योंकि sin 0 is 0, sin pi is 0, sin 2 pi is 0, sin minus pi is 0, sin minus 2 pi is 0, sin 3 pi, 4 pi, minus 3 pi, minus 4 pi, and so on. For every value of pi, every multiple of pi, sin goes to 0. So leaving x equal to n pi at all the points, cosec x is continuous. So secant x is continuous for all x leaving
x इक्वल टू n पाई, ठीक है। और साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होता है अपने को दिखाना पड़ेगा, तो अपन जैसे 21 में क्या था, बस वही चीज अपने को 22 में वापस करनी है। सेकंड एक्स के लिए भी यही सेम एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं, बस 1/cos x कर दूंगा, तो cos x जहाँ पे 0 होते हैं वहाँ पे sec x भी डिफाइन नहीं होगा, तो cos x कहाँ पे 0 होता है, तो मैं उसको लिखता हूँ cos x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, ये आपको याद होना चाहिए बेसिक, cos x पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे 0 होता है, मतलब 2n + 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे cos x 0 होता है, so we can say that at 2n + 1 pi by 2, at 2n + 1 pi by 2, our cosecant x is 0, so secant x is not defined or is discontinuous at 2n + 1 pi by 2, rest it is continuous. And then cot x is cos x upon sin x, cos x is also continuous, which we will prove, sin x is also continuous, which we will also prove. So cot x is also continuous, leaving all those x where sin x becomes 0. So at x equal to n pi, cot x is not continuous, except it is continuous everywhere. So this is basically an extension of question number 21 only. For proving all the trigonometric functions to be continuous, we just have to prove sin x and cos x to be continuous. Rest all can be done by using properties of continuous functions. Just we have to keep in mind that the denominator should not equal to 0. Like for cosec x, for sec x, 1 upon cos x, so cos x should not be equal to 0. So x should not be equal to 2n + 1 pi by 2. For cosec x, sin x is equal to 0, x should not be equal to n pi. For cot x, sin x, cot x is cos x upon sin x, so sin x should not be equal to 0, so x should not be equal to n pi. Just we have to keep these points in mind, and you have to just learn how to prove sin x and cos x to be continuous, and then you can easily do question number 21 and question number 22. Even you can do further questions. So let's see further. Question number 23. Fx is equal to sin x upon x if x is less than 0, and is equal to x plus 1 if x is greater than equal to 0. Okay, so let's do it. We have to check the points of discontinuity now. So we know that we have to check for x equal to 0. Rest all it is, but we will check for everything. So let's start with case number 1. C less than 0. अपन लोग लेस देन 0 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो निकालेंगे एफ ऑफ सी, वही काम यहाँ वापस करेंगे, तो एफ ऑफ सी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सी आ जाएगा साइन सी अपॉन सी, ठीक है। फिर अपन लोग क्या निकालेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स क्या डाल दूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स की जगह देखो एक्स टेंडिंग टू सी है, मतलब एक्स सी लेस देन 0 के लिए कौन सी फंक्शन है, साइन एक्स अपॉन एक्स, मैं क्या डाल दूंगा, साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से आ जाएगी साइन सी अपॉन सी, सिंपल। तो वापस से एफ ऑफ सी और लिमिट बराबर आ रही है, तो हेंस फंक्शन इज continuous for all x less than 0, ठीक है। ये अपने प्रूव कर दिया। फिर अपन लोग चलते हैं केस 2 पे। केस 2 में अपन लोग बात करते हैं c ग्रेटर देन 0 की, हमेशा की तरह। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें वापस अपन लिखेंगे एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ सी जाएगा 0 नहीं, 0 नहीं, x + 1, तो हो जाएगा c + 1, ठीक है। फिर अपन लोग क्या करेंगे, फिर अपन लोग करेंगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c, f of x is equal to limit of x tending to c, f of x क्या डाल दूंगा मैं, c + 1 x + 1, तो ये जाएगा x + 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू c + 1, तो वहां से भी c + 1, यहाँ से भी c + 1, तो वही कहूंगा वापस, hence function is continuous at all x greater than 0, सिंपल, ठीक है। अब मैं चलता केस 3 पे। केस 3 कौन सा होगा, c = 0 वाला। केस 3 क्या होगा,
c इक्वल टू 0, सिंपल। ठीक है, तो c इक्वल टू 0 के लिए अपन क्या करेंगे, c इक्वल टू 0 के लिए अपन लोग लिखेंगे f ऑफ c कितना हो जाएगा, f ऑफ 0, 0 कहाँ पे इंक्लूडेड है, 0 यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो 0 + 1 इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ c कितना हो गया, 1। फिर अपन लोग निकालेंगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c, f ऑफ x, वापस यहाँ पे दो केस बनेंगे, टेंडिंग टू c माइनस और टेंडिंग टू c प्लस। तो मैं वही सॉल्व करता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, ये क्या जाएगा, sin x अपॉन x, sin x अपॉन x। ठीक है, और ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि जो अपना लिमिट ऑफ टू 0 sin x अपॉन x है, ये 1 होता है। ये चीज अपन लोग लिमिट में पढ़ते हैं, इसका एक बहुत ही प्रॉपर प्रूफ है, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि ये चीज लिमिट से अपन को डायरेक्टली याद रहती है, अपन इसको, हाँ, अपन इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैसे, फ्रॉम लिमिट्स, ये लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है, आप ऐसा भी मान सकते हैं, इसका प्रूफ है क्लियर, लेकिन ये अपने को पता होना चाहिए कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो। अभी राइट हैंड लिमिट में करूंगा मैं, उसमें भी मैं ये लिखूंगा, तो भी मैं यही लिखूंगा कि sin x अपॉन x, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बात कर रहे हैं अपन, चाहे राइट हैंड लिमिट के लिए बात करें, दोनों केस में लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 पे sin x अपॉन x 1 को जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मैं करूंगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस f of x is equal to limit of x tending to 0 plus f of x, ये क्या डाल दूंगा, x plus 1, x plus 1, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 + 1 = 1। तो अपन देख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि वहां से तो आ रहा है, तो वहां से भी बना रहे हैं, यहाँ से भी बना रहा है, सॉरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मेरे दिमाग में 0 चल रहा था, तो क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और अपनी f of 0 की वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे भी। कर लिखूंगा मैं वही जो अभी तक लिखे हुए आ रहे हैं, हेंस since limit exists and is equal to value of function at 0, so the function is continuous at x equal to 0, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 24 में अपने को बोला है, अच्छा वैसे ही फंक्शन, वैसे ही क्वेश्चन है क्या, ओके, द क्वेश्चन इज सेम लाइक दैट ओनली, वी विल चेक फॉर x लेस देन 0, वी विल चेक फॉर x, अच्छा x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब चेक करना पड़ेगा, लेकिन मतलब दो डेफिनेशन अलग नहीं है, सिर्फ x इक्वल टू 0 पे डेफिनेशन अलग है, बाकी डेफिनेशन सेम है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ऐसे आएगा ना, इसमें अपने को पता है, इसमें ऐसा कंडीशन बनेगी कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x² sin 1/x, इसको अपन लोग कैसे सोल्व करेंगे, अपने को भाई sin x की वैल्यू 1 -1 से 1 के बीच में जाती है, तो sin 1/x की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में जाएगी, तो इसमें x² का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा -x² से +x² के बीच में। तो मैं एक काम करूंगा ना, मैं इस पे दोनों तरफ लिमिट लगा दूंगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 -x² is greater than limit of x tending to 0 x² sin 1/x is greater than limit of x tending to 0 plus x²। तो इसका मतलब मेरी जो लिमिट होगी x² टेंडिंग टू x टेंडिंग टू 0 x² sin 1/x, ये जाएगी 0 से लेकर 0 तक, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी बेसिकली, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का वो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ, मतलब इस चीज में आपने को सोचना पड़ेगा, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कर देता हूँ। ये कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का मैं मेन पार्ट कर रहा हूँ बस, इसमें अपने को क्या बोलना है, अपने को करना है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x² sin 1/x। तो इसको अपन लोग कैसे कैसे करेंगे मैं वो बता रहा हूँ आपको, देखो अपन लोग क्या करेंगे ना,
अपने को पता है कि साइन एक्स की वैल्यू जाती है -1 से 1, तो साइन 1/x की वैल्यू भी -1 से 1 जाएगी, फंक्शन तो साइन ही है ना, तो इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में जाएगी। ठीक है, फिर अपन लोग क्या लिखेंगे, अब क्योंकि हम इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपन लोग मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। अपन लोग मल्टीप्लाई सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी का कर सकते हैं इनइक्वालिटी के केस में, ये पता है ना अपने को। इनइक्वालिटी जब भी होती है ना, तब सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी में इनइक्वालिटी पलट जाती है, ध्यान रखना। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +x²। ठीक है, तो अब मैं दोनों तरफ लिमिट लगा देता हूँ। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ x², लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 x² साइन 1/x, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 x²। ठीक है, तो अपने को पता है कि इसमें अपन लोग डालेंगे x की जगह 0 डालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 0। फिर यहाँ से बीच में ये चीज लेके इसको मैं मान लो a मान लेता हूँ। ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग लिमिट ऑफ एक्स टू 0 x² में x की जगह 0 डालेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो मेरी a वाली लिमिट है वो 0 से लेकर 0 तक जा रही है, 0 से लेकर 0 तक जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो लिमिट 0 है, सिंपल। इससे अपने को क्या पता चलता है, इससे अपने को पता चलता है कि a इज इक्वल टू 0, मतलब लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 x² साइन 1/x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस ये चीज अपने को इस चीज की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको कि x² साइन 1/x की लिमिट भी टेंडिंग टू 0 पे 0 ही होगी, चाहे अपन लेफ्ट हैंड से जा रहे हो चाहे राइट हैंड से जा रहे हो। ठीक है, तो दिस वे क्वेश्चन नंबर 24 भी हो जाएगा। फिर अपन लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। In question number 25, we are given function value to be sin x minus cos x if x is not equal to 0 and -1 if x is equal to 0. So I will check at x equal to 0. So let me check for c equal to 0. ये अपना पहला केस मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, c लेस देन 0 के लिए भी अपने को c लेस देन 0 के लिए भी चेक करना पड़ेगा, वो भी मैं चेक कर दूंगा। चलो पहले मैं c equal to 0 के लिए चेक करता हूँ। तो f of c निकालूंगा तो क्या आएगा, f of c आ जाएगा f of 0, मतलब f of 0 देखो कहाँ पे इंक्लूडेड है, 0 यहाँ पे है, -1 आएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं लिमिट निकालूंगा, सिंपल। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स की जगह डालूंगा, एफ ऑफ एक्स की जगह डालूंगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ से मुझे पता जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 माइनस कॉस 0 इज साइन 0 माइनस कॉस 0। क्या आएगा, ये आएगा -1। ठीक है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो अपन देख सकते हैं कि एफ ऑफ सी और लिमिट दोनों सेम आ रही है, इसका मतलब मेरा फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। ये तो बहुत सिंपल था। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सिंपल। अब मैं चेक करता हूँ व्हेन इफ इज नॉट इक्वल टू 0, इफ c इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी चेक करना पड़ेगा ना। क्या लिखूंगा, मैं वही लिखूंगा एफ ऑफ सी। मैं लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के लिए अलग अलग क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों को साथ में कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों के लिए डेफिनेशन तो यही होगी, एक्स लेस देन 0 के लिए भी होगी, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही होगी। ठीक है, एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी हो जाएगा साइन सी माइनस कॉस सी, और फिर मैं लिमिट निकालूंगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स के डालूंगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सिंपल। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन सी माइनस कॉस सी।
ठीक है, तो इसका मतलब हेंस ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। ठीक है, क्योंकि वो 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है और बाकी सब पे भी कंटिन्यूअस आ रहा है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन नंबर 25 कर लिया है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 to 29 पे। क्या बोला गया है? Find the values of k so that the function is continuous at the indicated points. Okay, so ये तो सिंपल है यार। इन चारों में आपको एक ही चीज करनी है, आपको लिमिट निकालनी है फंक्शन की, जो पॉइंट दिया हुआ है उस पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पे जो पॉइंट दिया हुआ है, और फिर दोनों को इक्वेट करना है। सिंपल सी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगानी है और अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 26 में x दिया हुआ है k cos x upon pi minus 2x for x not equal to pi by 2, और दिया हुआ है 3x equal to pi by 2। सो देखो f of pi by 2 को मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, तो मेरे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3। फिर मैं निकालूंगा क्या? फिर निकालूंगा लिमिट, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू पाई बाई 2, क्योंकि मैं दोनों दोनों को एक साथ निकाल सकता हूँ, क्योंकि x लेस देन पाई बाई 2 पे वही है, x ग्रेटर देन पाई बाई 2 पे भी वही है। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू पाई बाई 2 f of x is equal to limit of x टेंडिंग टू पाई बाई 2। f of x की जगह मैं डाल दूंगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, तो डाल दूंगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ पे मैं डाल दूंगा पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 होता है 0। तो फिर यहाँ पे अपन नहीं कर सकते इसको सॉल्व, क्योंकि नीचे भी 0 बन जाएगा। तो अपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, अपने को क्या तो एल ऑर्बिटल रूल पता होना चाहिए। एल ऑर्बिटल रूल अपन लोग लिमिट्स में पढ़ते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग। लेकिन चूंकि आपको पता नहीं होगा, तो अपन ये काम और कर सकते हैं ना, अपन ने अभी तक किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। क्या करे थे, अपने को जो x दिया था अपन उसमें h ऐड करे थे। अपन लेंगे पाई बाई 2 प्लस h, और अपन लोग लिख देंगे लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0। तो मैं उस तरीके से सॉल्व करता हूँ। लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 k cos पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। पाई माइनस 2x पाई माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस h लिखेंगे अपन लोग, तो 2 टाइम्स पाई बाई 2 तो हो जाएगा पाई, और प्लस h लिखेंगे तो वो हो जाएगा प्लस 2h। उसको मैं बड़ा कर देता हूँ। क्या लिखेंगे? पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस h, तो हो जाएगा पाई माइनस 2h। तो यहाँ से पाई माइनस पाई कट जाएगा, अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 के cos पाई बाई 2 प्लस h दिया हुआ है अपने को पता है cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस x होता है sin x, तो हो जाएगा sin h डिवाइड बाई पाई माइनस पाई कट जाएगा, बचेगा माइनस 2h। और ये चीज अभी मैंने बोली थी आपको कि साइन एच अपॉन एच और एच टेंडिंग टू 0 ये चीज 1 होती है। ये अपन लोग लिमिट्स में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी है अपनी। ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिमिट्स की, और ये बहुत जगह यूज आती है, तो ये चीज अपने को ध्यान से याद होनी चाहिए। साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा 1, क्या बचेगा? 1 अपॉन माइनस 2। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? -1 अपॉन 2, मतलब माइनस के अपॉन 2। के भी बच रहा है ना, माइनस के अपॉन 2 जो निकालना है वही गायब कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया? माइनस के अपॉन 2। और मेरे को दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई बाई 2 शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लिमिट एट पाई बाई 2। तो अपन लोग क्या करेंगे? वी विल इक्वेट लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू एंड वी विल गेट एन आंसर। सो माइनस के बाई 2 should be equal to 3, and from here we can easily see that our k is nothing but equal to -6. It's like, did we do some error?
I think so. Cos pi plus x. The cos pi plus x is actually minus sin x. So here we will also get minus, and this minus will cancel out. So we will get k by 2 only. So k by 2 equal to 3 we will get. And from here we can say that k is equal to 6. So we have to calculate the value of k only. So our question is then simple. Okay. So questions are simple. You have to just apply the logic of limits and we can easily compute our answers. So I am leaving question number 27. Damn easy question. We have to do the same thing. So let's move to question number 28. Okay. And 29 is also simple. You can do it by yourself. Let me do question number 28. Because 26 to 28, all questions are same actually. Then too, I can do question number 28. We have given x equal to 5. So let's compute f of 5 first. So f of 5 will come out to be equal to 3. 5 is given here. So it would come out to be 5k plus 1. 5k plus 1. Okay. Then we will compute limit of x tending to 5. F of x, again we can do f5 minus and 5 plus simultaneously because we are given x not equal to 5. No, we have to do it differently because we have given x less than 5 and x equal to 5. Okay, so we will do it by taking limit of x tending to firstly 5 minus f of x, and we will get it equal to limit of x plus 1. So what we will get? We will get minus 5k plus 1. Minus 5k plus 1. Okay. So this is what we will get. Now let me compute it for 5 plus minus 5 plus. Matlab equal to limit of x tending to minus 5 plus. Now we will compute for this. So fx, we will get what? We will get limit of x tending to minus 5 plus, and from here we will get or 5 minus 5 greater than minus 5, minus 5 only 5, sorry. Sorry for the confusion. Okay, so for 5 plus we will get what? We can see for greater than 5. I did something wrong. I can say that it is not 5. I actually took 5 from here. It is actually pi. So it would be pi k plus 1, sorry. And here also it is pi. Sorry for the confusion. I actually mixed two questions. So it would be pi minus, here it would be pi, and here it would be minus pi k. Minus pi k, only pi k plus 1. Okay. And here also we will get pi. Here also we will get pi. So we will get for pi plus, we are getting cos pi. So I will get cos of pi. And we know that cos pi is equal to minus 1. So this thing is equal to minus 1. Now use the definition of limits, the definition of continuity. For continuity, limit should exist, and limit exists when? Limit exists only and only when both RHL and LHL are equal. Means right hand limit should be equal to left hand limit. If limit is existing, so pi k plus 1 should be equal to minus 1. Pi k plus 1 should be equal to minus 1. And from here, we can see that the value of k is coming out. Let me write it clearly. Value of k is coming out to be minus 2 by pi. Okay, so we have calculated the value of k. That's only we have wanted. So we did. So it's very simple actually. You have to just know the definition of continuity. Definition of continuity says only two things. First, it should exist at that point finitely, and secondly, the limit should be equal to the value of function at that point. You have to just remember these two things and you can solve the entire chapter. Okay. So let's move to the next question, question number 30.
we have given that the function is continuous and we have to calculate the values of a and b. Okay, so let's do that. Question number 30. So 30 mein, we have given that the function is continuous. So if the function is continuous, we can say that the function is breaking at 2 points, 2 and 10. So the function should be continuous at 2 and 10. So first we will calculate f of 2. F of 2 is equal to 5. Then we will calculate limit of x tending to 2, f of x. And this will come how much? This will come from here, it will come 5. And since it is continuous, so this is left hand limit and this should be equal to right hand limit. Right hand limit will come 5a plus b. So 5 should be equal to 5a plus b. This is our first equation. Now we will compute f of 5 in the similar way, f of 10. F of 10 is coming out to be 21. Now we will calculate limit of x tending to 10, f of x. This is coming out to be how much? From here you can see it is coming 10a plus b. 10a plus b, left hand limit. I'm not writing 10 minus and 10 plus, that you can do by yourself now. And for x greater than or equal to 10, it is coming 21. So this is our second equation. So two variable, two equations you can easily solve. Let me write both the equations. 5a plus b equal to 5 and 10a plus b. One second, let me write it clearly. 10a plus b equal to 21. So two equation, two variable, we can easily solve it, and we can get solving. We will get a equal to 2 and b equal to 2. One second. I did some. Oh, it should be 2a plus b because we are putting here 2. Oh, you see, I can see that it is not matching our answer. And putting a equal to 2, we will get b equal to 1. So this is our final answer. So again, same thing. Just apply the definition of continuity. We wrote f of 2, f of 10, then we calculated limit of x tending to 2, 2 minus and 2 plus, we equated it. Similarly, we calculated limit of x tending to 10, 10 minus 10 plus, we equated it. We got two equations, and from there we can easily get the value of a and b. Okay, so the question was again quite simple. Let's move to question number 31. In question number 31, we have to prove, it's a composition of functions. This also we read in the theory that a composite function is continuous if and only if, like, if I say f of gx, so it is continuous when f of gx is continuous. Continuous when gx is continuous and f of x is continuous for all x equal to g of x. ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब एक gx आपका कंटिन्यूस होना चाहिए x के लिए और आपका fx कंटिन्यूस होना चाहिए सारे gx के लिए. मतलब gx भी कंटिन्यूस होना चाहिए, f of gx भी कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी जाके मेरा फंक्शन कंटिन्यूस होगा. तो देखो आपको पता है अपने को क्या दिया हुआ, अपने को दिया हुआ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस होता है, अपने को पता है. अपन ने ऊपर प्रूफ भी किया था. कैसे प्रूफ करेंगे? वापस वही वैसे प्रूफ करेंगे. कोई भी जनरल वेरिएबल ले लेंगे c, then we will calculate f of c, it would be c squared. Then we will calculate limit of x tending to c, f of x, it would be limit of x tending to c, x squared, that will be equal to c square. So we can easily prove that x squared is continuous function. We have proved it above also. So x squared is continuous, and we know that cos x is continuous. Cos x is a continuous function. Since cos x is a continuous function, so cos of x squared is also a continuous function. So we can easily say that the function cos of x squared is a continuous function. Simple. So see, cos x continuous function है, ये अपन ने proof कर दिया है.
x square is a continuous function that we have also proved upside. So we can easily write that it is known that for these are real valued functions. That for real valued functions, g of fx, which I wrote, is continuous only and only if g is continuous at x and f is continuous at g of x. So f of g is continuous at x. Hence, cos of x square is continuous. So simple. We have to just apply the property of limits, and we can do this question. Can it make sense? X square is continuous and cos x is continuous. One thing more, this you have to show. I have shown it before, so I'm not doing it again. But you have to show that x square is continuous and cos x is continuous. So by theorem, cos of x square is also continuous. Simple. ठीक है, तो अपने को बस इतना ही पता होना चाहिए. अगर if we can do this much, then we can easily solve the question. Now moving ahead, it is again a composite function mod of cos x. For this to be continuous, cos x should be continuous and mod of cos x should be continuous. So चलो अपन 32 करते हैं. 32. ठीक है. Then question number 33 is same. And then we will be left with question number 34 only. Question number 34 is nice. So first let me do question number 32, then I will do question number 34. So for proving mod of cos x to be continuous, again, firstly you have to prove cos x to be continuous, which we have proved earlier. So let me prove just that mod x is also continuous function. So this is also I proved earlier, but let me do it again. For proving mod x to be continuous, because this we need in next question also, no? That's first we have to break this function. So let fx equal to mod x, f of x equal to mod x. The thing is equal to x if x is greater than or equal to 0, and this thing is equal to minus x if x is less than 0. Simple. So now अपन को इंडिविजुअल चेक करेंगे. तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं. एट x इक्वल टू 0 अपन लोग क्या लिखेंगे? एट x इक्वल टू 0 f of 0, इसमें भी डाल दो 0 ही आएगा. फिर अपन लोग निकालेंगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, f of x is equal to limit of x टेंडिंग टू 0. अभी अपन लेस देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस x, और ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस x, और उल्टा. लेकिन दोनों में अपन 0 पुट करेंगे तो अपने पास फाइनल आंसर 0 ही आएगा. तो ये 0 ही होगा. ठीक है. तो क्योंकि f of 0 और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 f of x दोनों 0 ही आ रहे हैं, हेंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0. एंड सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव फॉर x लेस देन 0. मतलब अपन 3 केस बनाते हैं ना. फॉर x लेस देन 0 बनाएंगे, फॉर x इक्वल टू 0 बनाएंगे, फॉर x ग्रेटर देन 0 बनाएंगे. ऐसे करके 3 केस बनेंगे इसमें भी. बाकी 2 केस तो सिंपल है, दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ. So I have proved that for x equal to 0, mod x is continuous. Similarly, we will prove for x less than 0, it is continuous. For x greater than 0, it is continuous. So in this way, we can say that, so mod x is a continuous function. Simple. And cos x is continuous. We have already proved earlier. So by composition, mod of cos x is continuous. Similarly, sin of mod x को कैसे prove करेंगे? mod x continuous है, ये अपन ने प्रूव किया. sin x continuous है, ये अपन प्रूव कर चुके हैं. Hence sin of mod x is also continuous. Simple. ठीक है. तो ये देखो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस आपको थ्योरम आना चाहिए कि कंपोजिट फंक्शंस को अगर अपने को प्रूव करना है कि वो कंटीन्यूअस है, तो अपने को पता होना चाहिए कैसे प्रूव करते हैं. बस अगर अपने को थ्योरम आती है, then we can easily solve this type of questions. This type of questions are damn easy, just you have to know how to write the solution. Okay. So let's move to the last question, question number 34. So what's been asked in question number 34? Find all the points of discontinuity of mod x minus mod x plus 1. So first write fx
fx is given to us as mod x minus mod x plus 1. Okay, so this is our fx. So we have to find the points of discontinuity, So we know that mod x is we know that for mod x it is 0 where the graph turns, but mod x is continuous everywhere. Since mod x is continuous everywhere, mod of x plus 1 is also continuous everywhere. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो अपना फंक्शन है वो हर पॉइंट पे continuous होगा, क्योंकि अपने को पता है कि दो continuous फंक्शन का जो नेगेशन होता है या फिर दो continuous फंक्शन जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपना फंक्शन continuous ही आता है. तो एक्चुअली में अपने को इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. अपने को सिर्फ प्रूव करना है कि अपना mod x कॉन्टिन्यूस है और फिर अपने को प्रूव करना है कि अपना mod of x plus 1 कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, तो देखो mod x कॉन्टिन्यूस है, मैंने ऊपर प्रूव कर दिया है. मैं यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ कि mod of x plus 1 भी कॉन्टिन्यूस है. देन वी कैन इजीली सी दैट सिंस mod x is continuous and mod x plus 1 is also continuous, and difference of two continuous functions is also continuous, so fx is continuous everywhere, so number of points of discontinuity is equal to 0. तो मैं fx equal to mod x plus 1 के लिए सॉल्व कर देता हूँ. fx equal to mod of x plus 1. ठीक है, ये इसके बराबर होगा, ये होगा x plus 1 whenever x is greater than -1, and this thing is equal to minus of x plus 1 minus of x plus 1 whenever x is less than -1. Equality you can include anywhere, doesn't matter. So let me include it here only because दोनों से सेम ही आंसर आएगा. ठीक है, फिर आप लोग चेक करेंगे. वापस मैं बोल रहा हूँ, -1 लेस देन -1 के लिए आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, ग्रेटर देन -1 के लिए आप लोग खुद चेक कर सकते हैं. अपने को पता है वहां से कंटिन्यूस ही आएगा, अपने को सिर्फ लिमिट में डाल के सॉल्व करके दिखाना है. सो लेट मी चेक फॉर x इक्वल टू -1 at x equal to -1. What we can say? We can say that f of -1 is equal to f of -1 is equal to put -1 anywhere, you will get 0. Then we will compute limit of x tending to -1, limit of x tending to -1. ठीक है, for x less than -1 we will get x plus 1. From there we will get 0. and चलो मैं कर देता हूँ -1 माइनस for -1 माइनस मतलब -1 से कम के लिए अपन जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? यहाँ पे अपने को मिलेगा माइनस ऑफ mod x plus minus of x plus 1. So minus of x plus 1 minus of x plus 1. Okay, so when we will put -1 here, we will get 0. And similarly, for limit of x tending to -1 positive, what we will get? We will get x plus 1. We will get x plus 1. From here, when we put -1, we again get 0. So we can see that the value of, since both are equal, we can say that function is continuous at x equal to -1. Similarly, हम लोग -1 से छोटे के लिए और -1 से बड़े के लिए भी continuity प्रूफ कर देंगे. तो अपन प्रूफ कर दिए अपन ने कि mod x plus 1 continuous है. mod x continuous ये अपन ने ऊपर प्रूफ किया ही था. So in this way, I can write down, since mod x is continuous and mod of x plus 1 is also continuous, and difference of two continuous functions is also continuous by theorem. So in this question,
number of points of this continuity is 0. सिंपल, समझ में आया? तो कुछ भी नहीं है, अपने को बस लिमिट्स की डेफिनेशन लगानी है, कंटिन्यूटी डेफिनेशन लगानी है, एंड यू कैन इजीली सॉल्व एनी टाइप ऑफ question from continuity. Just remember that a function is continuous when limit exists at that point and the value of limit is equal to the value of function at that point. बाकी क्वेश्चन सिंपल थे, बस अपने को पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, how to solve the problem and how to jot it down. Only this we have to remember, and rest continuity is easy. Differentiability we will take in our next part. So I hope you understood it. Thank you.